हेलो 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 हेलो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आर यू गाइज रेडी? आर यू गाइज एक्साइटेड? If you are excited, type E in the chat box. E for excited in the chat box. Good morning. E for excited in the chat box. आज का जो लेसन है काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर इस लेसन की आपने प्रैक्टिस कर ली तो समझो आप बहुत सारी इंग्लिश बोलने वाले हो और बहुत सारे क्वेश्चंस आप पूछने वाले हो सामने वाले से, टू दी अदर पर्सन। जब कोई ट्रिप पर जाता है तो बहुत कुछ करता है और जब वो ट्रिप से लौट कर आता है बहुत सारे क्वेश्चंस आप उस व्यक्ति से पूछ सकते हैं। या फिर ऐसे समझ लीजिए कि जब आप ट्रिप पर जाते हैं और लौट कर आते हैं तो लोग आपसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सो आस्किंग क्वेश्चंस एंड आंसरिंग दीज क्वेश्चंस बोथ आर गोइंग टू हेल्प यू improve योर स्पोकन इंग्लिश। आप भी पूछने वाले हो क्वेश्चंस दूसरे लोगों को या दूसरे लोग आपसे पूछेंगे, तो आपको क्वेश्चंस भी पता होने चाहिए और आपको आंसर्स भी पता होने चाहिए। पता होने चाहिए से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से बोलना है, हाउ टू आंसर, हाउ टू स्पीक, राइट। तो यही प्रैक्टिस आज हम इस क्लास में करने वाले हैं। तो सुपर एक्साइटेड ये क्लास रहने वाली है, सुपर पावरफुल क्लास ये रहने वाली है, सुपर नॉलेजेबल ये क्लास रहने वाली है। तो आई वॉन्ट यू टू शो सम एक्साइटमेंट, कीप शोइंग सम एक्साइटमेंट इन द चैट बॉक्स। ओके, show your excitement in the chat box. Type E for excitement. Okay, E for excitement. So the topic is questions related to trip. Okay, questions related to trip. तो मैं क्या करने वाला हूं, what I am going to do, what am I going to do is I am going to talk about my trip. मैं अपनी ट्रिप के बारे में बात करने वाला हूं। आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट माई ट्रिप, जिससे कि आपको एक अंदाजा मिल जाए, यू हैव फेयर आइडिया how to ask questions and how to answer these questions. Okay, so are we guys ready? Type ready in the chat box. If you guys are ready, type ready in the chat box. If you guys are ready, type ready in the chat box. Type I am ready in the chat box. Okay, I am ready in the chat box. Awesome. So let's get started. Number one question is a simple question. How was your trip? A very simple question. And simple question and answer is very simple. The trip was really good. The trip was really good. नॉर्मली पॉजिटिव की ही बात कर लेते हैं, बट आपकी ट्रिप कैसी भी हो सकती है।
तो दूसरा हो सकता है द ट्रिप वॉज गुड। रियली गुड नहीं थी, ठीक थी। ट्रिप वॉज अमेजिंग, वी रियली एंजॉयड, लाइक दैट। जैसी भी थी ट्रिप आपकी वैसी आपको बता देनी है, राइट। अगर आपके पास कोई और हिंदी सेंटेंस है इसको लेकर इसके जवाब में, तो वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, मैं उसको यहाँ इंक्लूड करने वाला हूँ। So how was your trip? Second question is tell me about your journey. तो ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन है और इसका जो आंसर है काफी बड़ा हो सकता है, पहले वाले का भी हो सकता है बड़ा। अब डिपेंड करता है कि आप किस बारे में बात करना चाहते हैं, कितना बोलना चाहते हैं इसके आंसर में। जबकि इसके आंसर में तो आप सब कुछ बता सकते हैं। उस बंदे ने बोला अपनी यात्रा के बारे में मुझे बताओ, टेल मी अबाउट योर जर्नी। यू कैन स्टार्ट फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट एंड यू कैन कंटिन्यू टू टेल टिल द एंड, पूरा बता सकते हो। और ये इस तरीके से है जैसे इंटरव्यू में पूछा जाता है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, तो वहाँ भी कोई लिमिट नहीं होती, जितना मर्जी वहाँ पर भी बोल सकते हैं। तो इसको हम क्वेश्चन को अभी छोड़ देते हैं, क्योंकि हमारे पास और बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उनका जवाब देने के बाद ये आएगा टेल मी अबाउट योर जर्नी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर डिड यू गो, वेयर डिड यू गो। ओके, सो माय आंसर इज आई वेंट टू चेन्नई फॉर अ बिजनेस ट्रिप। I went to Chennai for a business trip. So this is a simple answer. Where did you go? Because that was the simple question. अगर इसमें आप कुछ भी ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, That's your choice. Nobody is stopping you. कोई रोक नहीं रहा है आपको। बट सिंपल क्वेश्चन सिंपल आंसर भी छोड़ सकते हैं आप। आई वेंट टू चेन्नई फॉर अ बिजनेस ट्रिप। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द पर्पज ऑफ योर ट्रिप। ओके, तो पर्पज हमने पहले बता दिया है। सो आप कह सकते हैं आई वेंट for this 2 day session, 2 day session with my guru, with my mentor Siddharth Rashikar. And that's all, but we can add more information. मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, nobody is stopping you. You can add as much information as you want, right? The session was called FBR. You can say FBR stands for Freedom Business Retreat. So these are the details. Next question is, did you have a good time? क्या आपने अच्छा समय बिताया? Did you have a good time? Did you have a good time? अब आप कई तरीके से बोल सकते हो। Indeed, वास्तव में। Indeed, I had a great time. Indeed, I had a great time. Or you can say simply, yes, I did. Yes, I did. हाँ, did you have a good time? Yes, I did. आप पूरा बोलना चाहें तो भी बोल सकते हैं yes, I did have a good time. Yes, I really had a good time. Yes, I really had a good time. Or you can say yes, I did have a good time. राइट, तो कई तरीके से आप एक सेंटेंस का जो है, एक क्वेश्चन का जो है जवाब दे सकते हो, राइट। नेक्स्ट इज व्हाट वर द हाइलाइट्स ऑफ योर ट्रिप। तो ये सबकी ट्रिप्स के हाईलाइट जो हैं अलग अलग हो सकते हैं, इसमें कोई सिंगल हाईलाइट नहीं होगा सबके लिए। तो मेरी इस ट्रिप का जो हाईलाइट था, द ट्रिप वाज एन आई ओपनिंग एक्सपीरियंस फॉर मी।
in terms of in terms of mindset, possibilities, and the kind of frequency I got. The kind of frequency I got. ये थोड़े से हाई लेवल की बात चली गई, बट जो हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये ट्रिप थी ये बहुत ही आंखें खोलने वाली ट्रिप थी, आंखें खोलने वाला अनुभव था। माइंडसेट मेरा चेंज हो गया और नई नई संभावनाओं के बारे में पता चला मुझे, राइट, कि क्या हो सकता है। और जो मेरी फ्रीक्वेंसी लेवल था वो बहुत ज़्यादा ऊपर चला गया इस ट्रिप के बाद। ऐसा कई बार किसी रिलीजियस प्लेस पर जाने के बाद भी आपके साथ होता है। किसी मंदिर में गए आप और आपने कोई उपदेश सुना तो वहां पर भी आपके साथ ये जो है एक्सपीरियंस हो सकता है। नाउ द क्वेश्चन इज, व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट? अब कई बार क्या होता है, आप एक जगह जाते हैं तो एक ही जगह नहीं जाते हैं, उसके आसपास भी चले जाते हैं। व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट? तो नॉर्मली यही आंसर होता है, आई विजिटेड मैनी प्लेसेस। आई की जगह मैनी वी भी लगा सकते हो आप, जैसे कि अगर आप बहुत सारे लोग गए थे तो यहाँ पर आई की जगह वी विजिटेड मैनी प्लेसेस। मैनी प्लेसेस लाइक फाइव रथास, देर इज अ प्लेस इन चेन्नई, फाइव रथास, एंड we also went to the beach and the Mahalakshmi temple. तो आई नीड टू रिकॉल, मुझे याद करना पड़ेगा। महालक्ष्मी टेम्पल, चॉकलेट हाउस, एंड many other places. I don't remember. Many other places on the way, right? So I or we visited many places like Five Rathas, beach, Mahalakshmi temple, chocolate house, and also the clock tower. Not clock tower. That was some tower on the seashore. That is, what is that called? Watch tower or something. I don't remember that, but we visited that also. So this is how you can tell कि भाई कहाँ कहाँ गए थे आप। I visited many places. तो ये आप अपने जोड़ सकते हो कि आप कहाँ कहाँ गए थे। उसके बाद क्वेश्चन है, डिड यू मीट एनी इंटरेस्टिंग पीपल ड्यूरिंग योर ट्रिप? क्या आप किसी इंटरेस्टिंग बंदे से मिले अपनी ट्रिप पर? तो भैया मैं तो बहुत सारे लोगों से मिला। सो ऑलमोस्ट everybody was interesting. It was a room of 500 plus people. so many so many big achievers were there. they all they all they all are really interesting in what they do. जो भी वो करते हैं वो ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग है। तो क्योंकि ये एक बिजनेस ट्रिप थी और यहाँ पर अचीवर्स आए हुए थे, तो सभी लोग क्या थे, इंटरेस्टिंग थे हमारे साथ। तो बट अगर कोई खास बंदा इंटरेस्टिंग हो सकता है तो आप खास बंदे की भी कह सकते हो। देयर वॉज दिस डुओ, डुओ माने ये दो लोग थे। देयर वॉज दिस डुओ हु शोड ग्रेट मैजिक ट्रिक्स। इट वॉज मेमोरेबल सेशन। तो इन्होंने they also they also showed mind reading skills. So कोई भी स्पेशल बंदा आपको मिलता है उसके बारे में आप बता सकते हैं यहाँ पर, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट वाज द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर ट्रिप? मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ योर ट्रिप, तो ये आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा भी सबसे ज्यादा मेमोरेबल मोमेंट इस ट्रिप का क्या था। तो मेरे लिए तो ये था कि आई वॉज अवॉर्डेड with Hall of Fame reward by my mentor. It was a great achievement for me in this
digital era, I was rewarded. I was rewarded for being a digital coach. तो मैं अपना बता रहा हूँ आपको. You can tell yours. और आप अपना जो शेयर कर सकते हो मेरे साथ, राइट, लाइव क्लास में नेक्स्ट टाइम. इफ यू आर मेकिंग एनी मिस्टेक्स आई विल लेट यू नो कि भाई क्या मिस्टेक्स कर रहे हो आप. काफी डिटेल में हमारा ये लेसन जा रहा है, राइट. आर यू फाइंडिंग इट यूजफुल? कमेंट इन द चैट सेक्शन. यस, आई एम फाइंडिंग इट सुपर यूजफुल. Okay, so let's go to the next section. Next question. Did anything unexpected or surprising happen during your trip? पूछा जा रहा है कि क्या कुछ ऐसा हुआ था इस ट्रिप पर जो आपने बिल्कुल भी सरप्राइज, मतलब जो बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था. आप पूरी तरह से सरप्राइज हो गए अपनी ट्रिप पर. ऐसा क्या था इस ट्रिप में, राइट. So you can answer this. I am answering normally. The whole trip was a new thing for me. पूरी ट्रिप ही मेरे लिए नई थी. And everything was so surprising. However, अब आपने बोल दिया कि सब कुछ सरप्राइजिंग था, सब कुछ स्पेशल था मेरे लिए, सब कुछ नया था, बट कुछ तो ज्यादा ही मतलब स्पेशल होगा. However, having having my mentor in the same frame was the most unexpected um, thing for me in this digital era. I never imagined to meet my mentor. कभी मतलब सोचा नहीं था कि मैं अपने मेंटोर से मिलूंगा. But on this trip, not only I met him, but also got some great memories captured in my phone, right. So that was the most unexpected. देखो मैंने बिल्कुल naturally normal लिखा है. Normally the whole trip was a new thing for me and everything was so surprising. However, having my mentor in the same frame मतलब एक ही फोटो में, was the most unexpected thing for me in this digital era. कभी सोचा नहीं था. मैं अलीगढ़ में हूँ, मेरा जो मेंटोर चेन्नई में है और चल रहा है बस क्लास वगैरह. कभी सोचा नहीं था. तो मिलना भी हुआ, फोटो खींचना भी हुआ, बहुत कुछ हुआ. सो दैट वाज द मोस्ट अनएक्सपेक्टेड थिंग. And yes, everything was unexpected. Like we visited so many places, we never expected those things to happen, right? I also went to the beach, Chennai beach. Now, how was the weather during your trip? So this is a very normal question and you need to answer this. You can say the weather was good. अच्छा था weather, तारीफ ही करनी चाहिए. But on a hotter side. Of course, it is. Of course, it is Chennai. Of course, it is Chennai. So we can expect hot and humid weather. तो बंदे ने पूछा कि वेदर कैसा था आपकी ट्रिप पर. हाउ वाज द वेदर ड्यूरिंग योर ट्रिप? सो द वेदर वाज गुड बट ऑन अ हॉटर साइड. थोड़ा सा गर्म था. और फिर मैंने बोला कि हाँ मतलब अब क्योंकि बेशक ये चेन्नई है, ऑफ कोर्स इट्स अ चेन्नई, मतलब साफ तौर पे चेन्नई की बात हो रही है. तो चेन्नई तो होती ही गर्म है, थोड़ी सी ह्यूमिड भी होती है, ह्यूमिडिटी होती है वहाँ की एयर में, समुद्र का किनारा है. सो ऑब्वियसली यू कैन एक्सपेक्ट दीज थिंग्स. गोवा में भी है, जितने भी समुद्र किनारे हैं सब जगह ये होता है.
थोड़ी सी गर्मी रहती है, थोड़ा सा ह्यूमिड रहता है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज, डिड यू ट्राई एनी लोकल कुजीन, एनी फेवरेट्स, मतलब आपने कुछ स्पेशल खाया, कोई स्पेशल डिश आपने ट्राई की? तो मैंने तो भाई, आई ट्राइड डोसाज, idlis, and I also tried what was that? Crabs. I also tried crabs, but I didn't like crabs. Maybe the way they were cooked, maybe the way they were cooked, right? Uh, so these are the special things, like when you go to South India, you can try dosas, idlis, South Indian food, and during our time in the Leela Palace, during our time in Leela Palace, we tried, not we tried, we had uttapam and so many other South Indian dishes. Okay, so in the hotel in the hotel where I was staying, I was staying. I had filter coffees so many times. Filter coffees so many times. This was the this was the this was the first time. This was the first time I had filter coffee. ये पहली बार था जब मैंने फिल्टर कॉफी ली। तो आपको मेरे आंसर्स के हिसाब से आइडिया हो रहा होगा कि आपको कैसे लिखना है। दिस वाज द फर्स्ट टाइम, कोई चीज पहली बार करी थी, दिस वाज द फर्स्ट टाइम, राइट। और ट्रिप के दौरान, ड्यूरिंग आवर टाइम, ड्यूरिंग आवर स्टे, ड्यूरिंग आवर ट्रिप, आई ट्राइड, तो ये सारे वर्ड्स हैं जो आपको यूज करने हैं। मे बी हो सकता है। तो ये आप अगर इनको आप बोलेंगे, बाद में वीडियो को पॉज करके प्रैक्टिस करेंगे, तो ये वीडियो जो है आपकी ना अच्छी खासी मदद करने वाली है। आपका स्पोकन इंग्लिश का जो लेवल है, नेक्स्ट लेवल पर जाने वाला है। दिस वीडियो इज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिड यू डू एनी एडवेंचरस एक्टिविटीज? सो स्पेसिफिकली we did not not do any adventurous activities. However, visiting the places in Chennai was a great adventure in itself. मतलब हमने कोई खास अपनी तरफ से कोई हमारा इंटेंशन नहीं था एडवेंचर करने का, बट जो चेन्नई में जो हम प्लेसेस घूमे वो खुद ही अपने आप में ही एडवेंचर थे। तो specifically, we did not do any adventurous activities. However, visiting the places in Chennai was a great adventure in itself, right? तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। बहुत सारी इंग्लिश आप सीख रहे हैं यहाँ पर आज। तो यही है सही तरीका स्पोकन इंग्लिश सीखने का, जब आप डेली लाइफ के सेंटेंसेस को ज़्यादा से ज़्यादा समझते हैं और बोलते हैं। फिर इनमें आपको प्रॉब्लम आती है, तो उस प्रॉब्लम को आपको हमसे पूछना है बार बार। तो फिर वो आप परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं। परफेक्ट कभी नहीं होंगे, बट जा परफेक्शन की तरफ ही रहे हैं। The next question is, did you visit any historical sites or landmarks? So this is the kind of repetitive question, but आप जब आप इसका जवाब दे चुके हो तो फिर आपको कुछ अलग तरीके से जवाब देना है। और इसका जवाब अगर नहीं दे चुके हो तो बिल्कुल फ्रेश आंसर जो है आपको देना है, क्योंकि यहाँ पर हम जवाब दे चुके हैं। व्हाट प्लेसेस डिड यू विजिट? सो आई विजिटेड मैनी प्लेसेस लाइक फाइव रथास, बीच, महालक्ष्मी टेम्पल, चॉकलेट हाउस, टावर ऑन द सी शोर एंड मैनी अदर प्लेसेस ऑन द वे। अब ये जो क्वेश्चन है ये रिपीटेटिव है। डिड यू विजिट एनी हिस्टोरिकल साइट्स और लैंडमार्क्स? सो आप अब कह सकते हो कि यस, आई ऑलरेडी मेंशन दिस, दैट वी visited quite a
few places in Chennai. Quite a few places in Chennai. मतलब हम ठीक ठाक मतलब काफी उम्मीद से ज्यादा जगह पर चेन्नई में घूमे. फॉर एग्जाम्पल, 5 Rathas and Mahabalipuram beach, Mahalakshmi temple and many more. और बहुत सारी जगह पर गए, ध्यान ही नहीं है अभी तो. Right? So this is how you can answer this question. Did you visit any historical sites or landmarks? Yes, I already mentioned this, that we visited quite a few places in Chennai. For example, 5 Rathas, Mahabalipuram beach, Mahalakshmi temple and many more. Let's go to the next question. How was your accommodation? So I stayed in a, I don't know, 3 or 4 star hotel. Let's call it 3-star hotel in Chennai near Leela Palace. Leela Palace for night stay. And we spent our days in Leela Palace. So for our stay, we stayed in a 3-star hotel in Chennai near Leela Palace for our night stay. And for the program, obviously, we stayed in Leela Palace because the program was in Leela Palace. You can mention it because the program was in Leela Palace. Okay. So now you can also mention the quality. The accommodation was good. Because दूसरा आदमी जानना चाहता है कैसा accommodation था, रहना सहना कैसा था. The food was of high quality. अच्छी क्वालिटी का खाना था. There was a swimming pool. I wanted to enjoy, but could not due to the busy schedule. तो स्विमिंग पूल था जो मैं एंजॉय नहीं कर पाया वहां पर ड्यू टू द बिजी शेड्यूल. राइट. एंड room was good. AC was there. Hot shower was there. TV was there. So everything was good. Everything was good. It was a great stay. It was a great stay. ठीक था, मतलब जहां पर हम रुके वो जगह अच्छी थी. मैंने अच्छा खासा आंसर लिख दिया आपके लिए. इस वीडियो को पॉज करके बार बार आप पढ़ सकते हो इसको, तो इससे आपकी प्रैक्टिस जो है हो जाएगी. So I stayed in a 3-star hotel in Chennai near Leela Palace for night stay, and we spent our days in Leela Palace because the program was in Leela Palace itself. यहाँ पर आप itself लगा सकते हो, जरूरत तो नहीं है. The accommodation की स्पेलिंग तो बिल्कुल ही गलत बता रहा है. The accommodation was good. The food was of high quality. There was a swimming pool. I wanted to enjoy but could not due to the busy schedule. Room was good as AC. अच्छा, AC was there. Hot shower was there. TV was there. तो हम रिव्यू दे रहे हैं कमरे का और होटल का कि क्या क्या वहां पर था, क्योंकि बंदे ने क्वेश्चन वही पूछा है कि जहां पर आप रुके थे वो जगह कैसी थी. तो वहां पर ये सारी चीजें बतानी पड़ती हैं, बतानी चाहिए. What did you enjoy the most about your trip? अभी थोड़ा सा रिपीटेटिव क्वेश्चन है, इसका जवाब हम पहले दे चुके हैं, बट मान के चलिए पहली बार दे रहे हैं. सो आई एंजॉयड almost everything on my trip because I'm the kind of person who actually enjoys.
तो मैं आनंद ही लेता हूँ, तो मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो सब कुछ मजा आया वहाँ पर। इन माय होटल स्टे एट लीला पैलेस। लीला पैलेस सी व्यू, लीला पैलेस से हमने सम सी व्यू देखा। एंड द ग्रैंडनेस ऑफ लीला पैलेस, लीला पैलेस कितना बड़ा था वो देखा हमने, कितना मतलब बढ़िया जगह है। एंड द प्लेसेस वी विजिटेड, एंड द प्लेसेस वी विजिटेड, आई ऑलरेडी मेंशन, ऊपर मेंशन किया हमने कौन कौन सी जगह हमने विजिट की। तो ओवरऑल एवरीथिंग वाज ग्रेट, सब कुछ बढ़िया था। तो इस तरीके से कह सकते हैं, राइट। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज, डिड यू ब्रिंग बैक एनी सोवेनियर्स और गिफ्ट्स? सोवेनियर क्या होता है कि कोई भी एक खास चीज होती है, वहां की निशानी होती है, जो आपको वहां की याद दिलाती रहती है, खास चीज होती है। और कोई गिफ्ट, सो ऑब्वियसली, ऑब्वियसली, ऑब्वियसली मतलब हाँ बिल्कुल, ऑब्वियसली माई हॉल ऑफ फेम रिवॉर्ड, जो मतलब मिला मुझे, हॉल ऑफ फेम रिवॉर्ड मिला, द नोटबुक्स, पेन, all these things, all these things I bought, I brought some some pearl, some pearl garlands, some pearl garlands for my daughter. मैं मोती की माला लेकर आया उसके लिए। एंड I wanted to have a shank that is called conch for a long time. ओके, तो मैं शंख अपना घर में लाना चाहता था, और बहुत दिनों से, कब से लाना चाहता था पता नहीं, बट दिस टाइम माय विश वाज फुलफिल्ड। आई ब्रॉट अ ग्रेट शंख, आई एम ब्लोइंग डेली, मैं रोज बजाता हूँ उसे, तो मैं लेकर आया वहां से। ओके, तो ये था पूरा, मैंने बता दिया भैया मैं क्या क्या लेकर आया था, राइट। तो आप इसको पढ़ सकते हैं। Obviously, my Hall of Fame reward, the notebooks, pen, all these things. I brought some pearl garlands for my daughter, and I wanted to have shank, conch for a long time. But this time, my wish was fulfilled. I brought a great shank. I am blowing it daily. I am blowing it daily. स्पोकन इंग्लिश में इतना एटविट का झंझट नहीं होता है, बट लाइक अगर आप बोलेंगे प्रॉपर तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इट इज गोइंग टू बी इम्प्रेसिव, राइट। व्हाट वाज द लोकल कल्चर लाइक? ये थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन है, तो वहाँ की आपको कल्चर बतानी है। तो इट वाज, इट इज, इट वाज चेन्नई। सो so the culture was obviously South Indian. South Indian. It is not easy to, it is not easy to explain this. However, the language is Tamil, and not easy to understand. And most people in, most local people actually, most local people are not really comfortable there with the outsiders. The local people of South India, what I think is, what I, इस तरीके से भी बोल सकते हो, what I think is, what I think are the local people of South India, what I think are not very friendly. Sorry, but this is my experience, are not very friendly,
with the outsiders. They are religious. They are religious. There are so many temples. तो इसके ऊपर तो एक बुक लिख सकते हैं हम, बट जो मैं बोल पा रहा हूँ, देयर आर सो मेनी temples and they have seafood like fish, crabs, and I don't know. I do not know. Maybe may be many more items. Maybe many more items. तो बिल्कुल नेचुरल भाषा में मैंने ये लिख के दिखाया है आपको। देखो, बिल्कुल जो मेरे दिल में आ रहा था वही लिख के दिखाया है मैंने। सो व्हाट वाज द लोकल कल्चर लाइक, तो कोई भी इसका जवाब जो है अलग तरीके से दे सकता है बट मैंने अपना स्टाइल में दिया है। इट वॉज चेन्नई, सो द कल्चर ऑब्वियसली साउथ इंडियन, द कल्चर इज, और इट वॉज नहीं था, वो तो अभी भी है चेन्नई, तो इट इज कर सकते हैं इसको। इट इज चेन्नई, सो द कल्चर इज ऑब्वियसली साउथ इंडियन। It is not easy to explain the culture. However, the language is Tamil and not easy to understand, and most local people are not really comfortable there with outsiders. The local people of South India, what I think, are not very friendly with the outsiders. They are religious. There are so many temples, and they have seafood like fish, crabs, and I do not know, maybe many more items. तो काफी नेचुरल भाषा में मैंने इसको लिखा है, तो इसकी आप प्रैक्टिस अगर कर देंगे 2-4 बार, तो ये आपकी स्पोकन इंग्लिश को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाने वाला है। राइट? कैसी लग रही है क्लास? जरा चैट बॉक्स में कमेंट करके मुझे फटाफट से बताओ भैया। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग योर ट्रिप? तो नॉट रियली, कोई खास चैलेंज नहीं था। वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस ट्रिप, तो पूरी तरह से हम इस ट्रिप के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे। हाउ एवर पीपल वर नॉट विलिंग टू speak and understand Hindi, and interestingly, we hired a taxi for 3 days. 3 दिन के लिए टैक्सी हायर किया था हमने, and initially the driver expressed that he cannot understand Hindi. So that was a kind of challenge, talking to him and conveying our messages. However, this fellow on the 3rd day suddenly started talking in Hindi. So that was a great joke, and I kind of got angry inside because he could have started talking in Hindi from the very first day. But he showed that he did not understand Hindi. मतलब ये रियल स्टोरी बता रहा हूँ मैं आपको। 2-2.5 दिन तक तो वो हमारे साथ बात ही करता रहा, क्या बोलते हैं, टूटी फूटी इंग्लिश में और तमिल में। तीसरे दिन बोलता है कि मुझे तो हिंदी आती है। मैंने तेरी तो, मतलब अच्छा खासा मजाक कर दिया उसने हमारे साथ। सो द क्वेश्चन इज, डिड यू फेस एनी चैलेंजेस और ऑब्स्टेकल्स ड्यूरिंग योर ट्रिप? तो अच्छा खासा आंसर मैंने लिख दिया है, इसको आपको 2-3 बार पढ़ लेना है, तो आपकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल पर चली जाएगी। इससे मैं बोल रहा हूँ आपको। नॉट रियली, वी वर मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर this trip. However, people were not willing to speak and
understand Hindi, and interestingly, we hired a taxi for 3 days, and initially the driver expressed that he cannot understand Hindi. So that was a kind of challenge talking to him and conveying our messages. However, this fellow, मतलब ये आदमी, on the third day suddenly started talking in Hindi. So that was a great joke, and I kind of got angry inside because he could have started talking in Hindi from the very first day, बिल्कुल पहले दिन से. But he showed that he did not understand. तो ये चैलेंज था, और वो जानबूझ के वो चैलेंज उसने क्रिएट किया था, intentionally, right? Okay, the next question is, would you recommend this destination to others? Why or why not? तो जिस जगह पर आप गए थे घूमने, क्या आप इस जगह को दूसरे लोगों को रिकमेंड करेंगे? करेंगे तो क्यों करेंगे, और नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे? राइट? सो सिंपल सी बात है, ऑब्वियसली सिंपल सी बात है, तो ऑब्वियसली बोल देंगे, और साफ तौर पर भी ऑब्वियसली बोल दे सकते हैं. ऑब्वियसली एनीबडी एनीबडी हु wants to go is Chennai. Chennai cannot be missed. Chennai cannot be missed. It is a great place. So many historical buildings and places to visit, and there are good hotels, and it is a capital city of Tamil Nadu. So obviously, one should visit this place, should visit this place if he or she is a traveler, right? Like, and if somebody is not able to talk in English, that person should consider not going, or maybe hiring a guide who can speak Hindi as well. तो ऐसा आदमी जो इंग्लिश नहीं बोल सकता, उसको नहीं जाना चाहिए चेन्नई, या फिर उसको जाके वहां पर एक गाइड हायर करना पड़ेगा जो हिंदी भी बोल सके उसके साथ और उसकी बात को समझ सके. तो या तो गाइड आपको रखना पड़ेगा, वो अगेन आपसे कम से कम 2-4-5 हज़ार रुपये ले लेगा, तो आपको बजट भी देखना पड़ेगा. और अगर आप गाइड भी हायर नहीं करना चाहते हैं और इंग्लिश भी नहीं आती है, तो अच्छी खासी मुश्किल हो सकती है, राइट? सो लाइक आप कह सकते हो, if you cannot speak English and do not want to hire a guide, it can be a big problem there, right? तो ये हो गया. अब आगे चलते हैं. व्हाट वाज द टोटल एक्सपेंस ऑफ द ट्रिप? पूरी ट्रिप का खर्चा क्या था? तो यहाँ पर तो बताने वाला चाहे बता दे पूरा खर्चा, चाहे ना बताए, क्योंकि कुछ चीजें प्राइवेट भी होती हैं. बट क्योंकि तो मेरी तो ये बिजनेस ट्रिप थी, तो द एक्सपेंस ऑन दिस ट्रिप वाज लाइक दिस. ऐसे बता सकते हैं, इस तरीके से था. तो इवेंट टिकट्स जो थी वो थी 10,500, एंड एयर टिकट्स थी यहाँ पर जो थी हमारी लगभग 17,000 की, राइट? एंड एयरपोर्ट
एयरपोर्ट एक्सपेंसेस, फालतू का खाना पीना, वहां पर मैंने खर्च कर डाले लगभग 5,000 रुपये। एंड एंड होटल, होटल स्टे जो किया हमने वो अच्छा खासा किया था। वो लगभग 24,000 रुपये खर्च हुए वहां पर। 3-4 दिन हम वहाँ रुके, 24,000 रुपये का स्टे हुआ 4 दिन की स्टे में होटल में। और टैक्सी एंड फूड 3 दिन का, 3 डेज, 3 डेज, तो ये भी आप मान के चल सकते हैं लगभग मोटा मोटी 10,000 रुपये आप इसको मान सकते हैं। एंड अदर टैक्सी, अदर टैक्सी एंड मिस्क एक्सपेंसेस, और भी बहुत सारे खर्चे हो जाते हैं इधर उधर, तो वो भी आप 10,000 मान सकते हैं, राइट। बाकी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है क्या खर्चा हुआ। सो ओवरऑल द एक्सपेंस ऑन दिस ट्रिप वाज लाइक दिस। सो 10,500, 17,000, 27,000, 5,032, and 24,000. It becomes 56,000, then 10,000, 66, then another 10,000. So 76,000 was the expense on this trip. So 76,000 approx was the expense on this trip. तो इस तरीके से आप बता सकते हो सामने वाले को। एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी मोर फॉर ऑब्वियस रीजंस, फॉर ऑब्वियस रीजंस। ये थोड़ा सा आप इसको थोड़ी प्रैक्टिस कीजिए, इस तरह के सेंटेंस, इसको फॉर ऑब्वियस रीजंस, इसकी प्रैक्टिस आप करेंगे तो आपको, आपकी जो इंग्लिश है वो नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। ओके, इट इज गोइंग टू बी, इट इज गोइंग टू बी का मतलब क्या है? इट इज गोइंग टू बी का मतलब है, इट इज गोइंग टू बी चल का रहा मतलब है कि हमने जो है प्लानिंग की है, पहले से प्लानिंग कर रखी है, और हम ऐसे ऐसी जगह पर जाने वाले हैं या वो एक्टिविटीज करने वाले हैं जिनसे जो है ज्यादा खर्चा होने वाला है, ये है। चलिए, तो फिर लास्ट क्वेश्चन, आप किसी ट्रिप पर जाते हैं तो लास्ट क्वेश्चन जो मैंने लिखा है कि भाई एनी टिप्स टू सेव मनी फॉर अदर्स हु वांट, हु प्लान टू गो टू ऑन सेम ट्रिप। तो अगर मैं अपने सारे खर्चे बताऊं तो लाइक यू कैन अवॉइड unnecessary unnecessary विजिट्स, यहाँ पर खर्चा बचा सकते हैं। यू कैन सेव मनी हियर एंड यू कैन गो फॉर अफोर्डेबल होटल, अफोर्डेबल होटल, यू कैन सेव मे बी 15,000, 2,000 में एक होटल मिल जाएगा आराम से, कोई नॉर्मल सा, यहाँ पर पैसे बचा सकते हैं आप। और एयरपोर्ट एक्सपेंसेस, unnecessary expenses on airport, take food, take food from home, घर से कुछ खाना लेके जाइए, बाहर से खुद खरीद के ले जाइए, तो वो खर्चा बच जाएगा आपका। और बाकी तो वही है, डोंट डू अननेसेसरी शॉपिंग, डू नॉट डू अननेसेसरी शॉपिंग, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड टेम्पटिंग, टेम्पटिंग शॉपिंग। मन कर रहा है, बस जी ललचा रहा है, वो वाली शॉपिंग नहीं करनी है। तो डू दीज थिंग्स एंड प्लान एवरीथिंग इन एडवांस, प्लान एवरीथिंग in advance and follow the plan, and follow the plan की जगह पर लिख दीजिए stick to the plan। प्लान बनाइए एडवांस में और प्लान के साथ चिपक जाइए, मतलब प्लान को पूरी तरह से स्टिक कीजिए। तो अच्छी खासी मैंने आपको आज वोकेबलरी दे दी है, बहुत सारे सेंटेंसेस दे दिए हैं। मैं चाहूंगा कि आप इसको ढंग से प्रैक्टिस करें, वीडियो को देखें, 2 3 4 5 10 बार देखें। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लेसन बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसको आप आराम से 8-10 बार देखें, पॉज कर करके बार बार रिपीट करें सेंटेंसेस को। इट इज गोइंग टू इम्प्रूव योर स्पोकन इंग्लिश, राइट। बताइए फटाफट से चैट बॉक्स में कमेंट करके कैसा था आज का लेसन और क्या क्वेश्चंस हैं आपके। नाउ यू कैन टेल मी योर क्वेश्चंस। या लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, गुड अंकित बाबू, मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। टेल मी गुड मॉर्निंग। एनी क्वेश्चंस हियर। आई ज्वाइन लेट। टू बी कंटिन्यू वाला सर, थोड़ा सा कौन सा कंटिन्यू वाला? बी, कंटिन्यू बी। नहीं आ रहा मुझे समझ में, क्या पूछ रहे हैं आप? वो ट्रिप के बाद आपने बोला ना कि बी कंटिन्यू या कंटिन्यू बी कुछ था सर। गोइंग टू भी बताया था हमने, तो इट इज गोइंग टू बी। हाँ हाँ, गोइंग टू बी। हाँ तो होने वाला है ना। कोई चीज अगर इट इज गोइंग टू बी है तो इसका मतलब वो हमने पहले से प्लान कर रखी है। मैं बोल रहा था इट इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव दिस टाइम। तो पिछली बार तो हमने बहुत कम खर्चा किया था, इस बार हम और ज्यादा खर्चा करने वाले हैं। प्लानिंग करके रखा हुआ है ना हमने एक्टिविटीज। तो इस तरीके से मैंने बोला था इट इज गोइंग टू बी मोर एक्सपेंसिव दिस टाइम। यहीं पे तो लिखा था हमने, एंड दिस टाइम इट इज गोइंग टू बी मोर फॉर ऑब्वियस रीजंस। ऑब्वियस सर। ऑब्वियस रीजन यही है कि लास्ट टाइम एक 3 स्टार होटल में रुके थे, इस टाइम 5 स्टार होटल में रुकेंगे। लास्ट टाइम हमने कुछ आइटम्स ट्राई किए थे, इस बार हम बहुत ज्यादा आइटम्स ट्राई करेंगे। लास्ट टाइम ड्रेस कोड नहीं था, इस बार ड्रेस कोड भी है। ऑब्वियस रीजन का मतलब ये मतलब नेसेसरी है। ऑब्वियस रीजंस मतलब, ऑब्वियस का मतलब है जो है, मतलब रीजंस, मतलब हमारे रीजंस यही हैं ऑब्वियस रीजंस। ज्यादा खर्चा करेंगे हम, अच्छी जगह पे रुकेंगे, अच्छा खाएंगे, अच्छा ट्राई करेंगे, अच्छा एडवेंचर करेंगे, ये ऑब्वियस रीजंस है। ऐसे पहले यूज करते हैं ऑब्वियसली, मतलब वास्तविक रूप में, मतलब है, इस तरह से ऑब्वियसली बोलते हैं। मतलब, ऑब्वियसली मीन साफ तौर पर, मैंने पहले भी कई जगह लिखा है इसमें हाँ तो, ऑब्वियसली। हाँ तो ऑब्वियसली वो तो समझ में आता है सर, ऑब्वियसली माने हाँ हाँ बिल्कुल। ऑब्वियसली माने हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब वो पूछ रहे हैं वुड यू रिकमेंड दिस डेस्टिनेशन टू अदर्स, व्हाई और व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, चेन्नई एक यहाँ। जगह है तो जाना ही हाँ, चाहिए। यहाँ पे तो हाँ बिल्कुल हो गया, और फिर वहां पे ऑब्वियस रीजन है। हाँ हाँ बिल्कुल, मतलब साफ तौर पर दिख रहा है ना, मतलब साफ तौर पर हाँ हाँ बिल्कुल का मतलब क्या है? साफ तौर पर दिखता है। हम्म, ये हमारे खर्चे अलग लेवल के हैं ना, दिखता है दिखता है। मतलब वास्तविक रीजन है उसके लिए। हम्म, बिल्कुल साफ है, मतलब हम खर्चा करते हैं। तो जिससे एक्चुअली ना ये बात है, दिस इज अ कन्वर्सेशन गोइंग बिटवीन टू पीपल जो लगभग एक दूसरे को जानते हैं। तो जब ये सारी बातचीत चल रही है तो हमने उसको बताया कि भाई 76,000 रुपये हमारे खर्च हुए थे लास्ट ट्रिप पर, और इस बार साफ तौर पर ज्यादा खर्च होंगे। तो इस बार साफ तौर पर ज्यादा खर्च होंगे, इसका मतलब हम थोड़ा बेटर क्वालिटी में रुकेंगे, बेटर क्वालिटी का खाना ट्राई करेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे, मतलब महंगाई भी बढ़ गई है 6 महीने में। तो वो सब चीजें, राइट। ये लेसन बहुत अच्छा था अंकित। मैं चाहूंगा कि इस वीडियो को आप 2-3 बार जरूर देखें और अपनी जो एक ट्रिप का सोचें, जो आप ट्रिप पर गए थे उसके बारे में सोचें, और फिर इन सारे क्वेश्चंस के आंसर उस ट्रिप के बारे में लिखें। राइट, कंप्यूटर पे लिखेंगे तो ऐसे माइंड मैप भी बना सकते हो, इस तरीके से माइंड मैप भी बना सकते हो कंप्यूटर पे अगर लिखने वाले हो तो। और क्वेश्चंस के आंसर लिखो, बनाओ, फिर पूरी एक स्टोरी बन जाएगी आपकी अच्छी खासी। इस तरीके से आप वीडियो प्लानिंग भी कर सकते हो, यूट्यूब पर वीडियो भी बना सकते हो इस तरीके से। अभी तबीयत ठीक है तुम्हारी? कैसी तबीयत है? अभी गड़बड़ सर हो गई थी तुम्हारी? स्क्रीन पे भी मतलब नहीं देख सकते हैं ऐसे, 10 बार 5 सेकंड देखे तो ठीक है, या फिर पानी आने लगता है वो आँख से। ओके ओके, मत देखो तो, सुनते हाँ रहो। नहीं, और राइट, डाइवर्ट, डाइवर्ट। और मत ज्वाइन करो अभी अगर आंखों में दिक्कत है तो। ठीक है, नहीं, सुन सकते हैं अभी, थोड़ा ठीक है, अभी बीच बीच में देख सकते हाँ, हैं। हाँ। राइट। तो बहुत तंगड़ी क्लास थी ये। कितने क्वेश्चन थे? 1 2 3 4 5 6, पता नहीं 20-22 क्वेश्चन थे यार, अच्छे खासी लिस्ट हमने बना दी है क्वेश्चंस की। सो ट्राई टू ट्राई टू वॉच दिस वीडियो अगेन एंड अगेन एंड प्रैक्टिस दीज क्वेश्चंस, और अपने क्वेश्चंस की लिस्ट बना लो, देन ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एंड गिव द आंसर योरसेल्फ।
क्वेश्चन पढ़ो, खुद से ही जवाब दे डालो. That is the best way. The more you do it daily, the better your spoken English becomes. Right? तो आज के Right. लेसन तो यही खत्म हो जाता है. But if you have any other questions for me apart from this topic, please let me know. सर वो मैसेज किया था लड़का, मतलब वो हो गया आप उसका? हाँ, उसको डिजिटल सक्सेस बंडल मिल पाएगा भाई. क्या ये है सर इंग्लिश उसमें? क्लास है, ये इंग्लिश क्लास है. इंग्लिश क्लास के क्वेश्चंस पूछो. ओके सर. नहीं वो सब का अलग है. किया था राम साथ. ओके सर, सॉरी. I'm asking if you have any questions related to English language, spoken English, grammar, any Hindi sentence you are not able to speak in English, something like that. Not yet. No questions? Not yet. Sorry. It's okay. What sorry? No need to be sorry. Then Every time once I have do same thing. not a problem. Okay. So watch this lesson again. Note down your homework. Write down all the questions. Okay. And It's answer. a podcast, something, a person who joined your coach, like, Sorry, what? don't remember the name of the person who coach, two coaches. Sorry. What are you Yesterday, saying? Tell me in Hindi. चल परसों एक मतलब कोच थे जो उनका एक वीडियो आया था आपके साथ. हाँ, बिहारी. हाँ, राइट सर. अमित कुमार जी. जी जी जी. यस सर. बताइए बताइए क्या हुआ उनका. मतलब मैंने सुना, मतलब काफी इंस्पायरेटिव था वो, कि कैसे लोग इंस्पायरिंग. हाँ, काफी इंस्पायरिंग था वो. और मैंने रिकमेंड भी किया किसी को सुनने के लिए वीडियो. हम तो चाहते हैं तुम भी आओ हमारे इंटरव्यू में. Well, I hope I can do. I will do definitely. You do it, okay? Okay. You do it, तो do it. काफी अच्छा था सर वो उनका, वो मुझको लगा. मतलब कैसे, मतलब आदमी थॉट प्रोसेस चेंज करते हैं यहाँ पे. मतलब कोई चीज किसी को रिकमेंड करे तो वो लेता ही नहीं है, और वो तुम सुनना भी एक नहीं ही चीज चाहता पे है. फोकस किया करो. एक ही चीज पे फोकस करो. तुम दिमाग बहुत लगाते हो. तुम अब दोनों बातें कर रहे हो कि उनकी यात्रा बहुत इंस्पायरिंग थी, और दूसरी बात तुम कह रहे हो कि यहाँ पर कोई सुनता ही नहीं है ना. राइट सर. दोनों बातों पे फोकस मत करो. तुम नॉर्मल आदमी हो जाते हो बहुत जल्दी, और अच्छी अच्छी बातें भी करते हो. तो नॉर्मल मत हुआ करो. स्पेशल कैटेगरी में ही बने रहा करो कि उनकी यात्रा बहुत इंस्पायरिंग थी, अच्छी थी, और बस वहीं टिके रहो. मतलब तुम एक तरफ कहते हो बिल्डिंग बहुत सुंदर है, सब कुछ है, बहुत बढ़िया है, वेदर बहुत अच्छा है, फिर दूसरी तरफ कहते हो यहाँ तो कीचड़ बहुत है, गंदगी बहुत है, फलाना ढिमकाना. उसकी बात ही नहीं करनी है. डोंट इवन टॉक अबाउट इट. राइट. आर यू गेटिंग मी. ओके. हाँ. गेटिंग. जस्ट टॉक अबाउट गुड थिंग्स. जस्ट टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंग्स. जस्ट टॉक अबाउट पॉसिबिलिटीज. जस्ट टॉक अबाउट super awesome happiness. That's it. Yeah. Are you getting this or not? Don't even talk about the things you don't want in your life. Got it, sir. Just focus on goodness. Yes, sir. Listen to good things. Watch good things. Speak good things. Yeah, मैंने काफी चीजें बदल दिया है. वो स्लो सॉन्ग्स और वो What happened? हेलो. Yeah, what happened? Tell me. तो अभी काम कर रहा हूँ सर थोड़ा अपने ऊपर. तो It's हो not जाएगा. calm. It's a decision. Okay. It's not a process. It's a decision. Okay. And you have to take this decision multiple times in a day. You have to take this decision multiple times in a day. Okay. Okay. Okay, Every sir. time you think about good things, appreciate yourself. Right. And you think about any negative or bad thing, just tell yourself, okay, cancel.
Start focusing on positive things. Okay, thanks. Yeah. Right. Focus on positive qualities. Focus on positive things. Focus on positive life. Okay. Okay, sir. That's all in this class, guys. Thank you very much.